So dear students, in this video we will be discussing topics which are in continuation of subset of a set. So next topic is intervals as subsets of R. Here R represents set of real numbers. So let A and B be two real numbers where A is smaller than B. Then a set given by this set builder form X such that X belongs to R and X is less than B, greater than A is called or is denoted by an interval. Is denoted by an interval AB is called open interval. Open interval. So this interval contains all real numbers which are greater than A and smaller than B. So this is called the open interval. This is the set builder form. This is the, you can say, roster form. But this is also a set, but this is somewhat different from usual set where order of elements may be changed, elements may be repeated. Here this is not so. Elements may not be repeated. So here A should come as first element because A is the smaller number. And this does not contain A and B. Open interval. This you can show on number line also. Number line. Then A, suppose A is here, B is here, then A and B are denoted by empty circles and this portion is shown by dark shading, indicated that A is not part of the interval, B is not part of the interval, all numbers between A and B are part of the interval. Similarly, we have closed interval where square bracket is used in place of small bracket. This is called closed interval. Closed interval is in the set builder form. This you can write X such that X belongs to R and X is less than or equal to B, greater than or equal to A. In this way, this is the closed interval. To denote this on number line, we use the notation A and B noted by dark circles and the portion between them is also shaded like this. So here A and B are part of the interval. So this is the notation of open interval and closed interval. They are also sets, but they are special because generally for sets we use the curly bracket as here, but for interval we do not use the curly bracket. That is why they are different, but they are also sets. Here number of element order of A and B is also fixed. A should be first number, B should be last number. Here A and B are not part of this interval and here A and B are part of interval when closed interval. So let me summarize this in Hindi. So intervals as subset of R. यहाँ पर इंटरवल की हम बात करेंगे जो R के सबसेट होते हैं. अब ये भी सबसेट है, मतलब R जो रियल नंबर का सेट है उसी का एक पार्ट है. तो अगर A और B दो नंबर आपने लिया जहाँ A स्मॉलर नंबर है, B ग्रेटर नंबर है, तो इस सेट को जहाँ पर X सच दैट X बिलोंग्स टू R, X इज लेस देन B, ग्रेटर देन A, इस मतलब इस सेट में ऐसे नंबर आने वाले हैं रियल नंबर जो A से बड़ी है और B से छोटी है. A और B नहीं आएंगे. तो इस तरह से इसको आप जब एक अलग नोटेशन में शो करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट के बीच में A भी लिख दिया जाएगा. और नंबर लाइन पर शो करने के लिए यहाँ पर नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर शो करने के लिए आपको A और B जहाँ भी पॉइंट मार्क होते हैं उसको एम्प्टी सर्कल से शो कर देंगे और बीच का पोर्शन आप शेड कर देंगे. ऐसे ही क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज होगा. यहाँ पे भी सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो X दैट X बिलोंग्स टू R और X इज लेस देन इक्वल टू B, ग्रेटर देन इक्वल टू A. तो इसमें A और B भी आएंगे और A और B के बीच की साइन नंबर भी आएंगे. तो इसको नंबर लाइन पर जब आप शो करेंगे तो वहां पर A को और B को डार्क सर्कल से शो करेंगे और बीच का पोर्शन पूरा शेड रहेगा. अब इसके आगे चलते हैं. दो टाइप के और इंटरवल्स होते हैं.
two more intervals. These are called semi-open, semi-closed intervals, like semi-open or semi-closed intervals. Semi-closed intervals. So one example is like this: A, B. Small bracket indicates close, open end, and square bracket indicates close end. This, when written in the set builder form, you can write this as x such that x belongs to R, x is less than or equal to B, greater than A. So this will include those real numbers which are greater than A but less than or equal to B. Here A is not part of this interval, B is part of this interval. So to show this on number line, A and B are marked like this. B is coming with equal sign, so B will be shown by a dark circle and A shown by an empty circle because A is not part of this interval, and then the portion between A and B will be shaded like this. So this way you can show this on number line. Similarly, you can have this is left open, right closed. You can have opposite also, like A closed, B open. This type of situation is also possible, like x such that x belongs to R. Here x is less than B, greater than or equal to A. So this will be shown on the number line like this. Show A and B. Here you can note that B is not part of the interval because B is the open end and A is part of the interval. So A will be shown by dark circle and B shown by empty circle. B is not part of the interval, and then between this shade the region with all numbers from A to less than B will part of this interval. So these are semi-open or semi-closed intervals. Let me summarize this in Hindi also. तो यहाँ पे सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट देखिए. यहाँ पर मतलब एक साइड से ओपन होगा, एक साइड से क्लोज होगा. जैसे ये इंटरवल है, लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज है. इसमें ऐसी नंबर आएंगी जो बी से छोटी होंगी या बी के बराबर भी हो सकती है और एक से बड़ी होगी. मतलब ए नहीं हुआ इस इंटरवल में, तो ए को आप एम्प्टी सर्कल से दिखाएंगे, बी को डार्क सर्कल से दिखाएंगे और बीच का पोर्शन शेड होगा. ऐसे ही आपका इसका अपोजिट भी हो सकता है, जहां पर राइट ओपन है, लेफ्ट क्लोज है, तो यहाँ पे ऐसी रियल नंबर आएगी जो ए हो सकती है या ए से बड़ी नंबर होगी और लेकिन बी से छोटी होगी. बी इसका इस इंटरवल में नहीं आएगा, तो बी को आप एम्प्टी सर्कल से शो करेंगे और ए को डार्क सर्कल से शो करेंगे. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के इंटरवल्स को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. और ब्रैकेट के नोटेशन में ओपन को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से दिखाना है और क्लोज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है. से बिल्डर फॉर्म में जहां पर ओपन होगा वहां पर आप इक्वल साइन नहीं लगाएंगे और जहां पे क्लोज होगा वहां पे इक्वल साइन लगाएंगे. ये ध्यान रखना आपको. इसलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप ले सकते हैं. Here you can have example like 3, 5 is open interval. On the number line you will show this in the set builder form like this: x such that x belongs to R, x is less than 5, greater than 3. So here 3 and 5. 3 and 5 to be shown by empty circles and shading between them like this you can show. Then you can have closed interval like 3, 5 in the form of set builder form: x such that x belongs to R, comma x less than or equal to 5, greater than or equal to 3. So here to show this, show 3 and 5 because 3 and 5 both are parts of this interval, so both shown by dark circles, and then shading will be done in between. So all numbers from 3 to 5 will be part of this interval.
here 3 and 5 are not part of this interval. Then you can have semi-open, semi-closed like 3 left open, right closed. This is x, so that x belongs to R. X is less than or equal to 5, greater than 3. So here on number line you can show this like this, 3 and 5. 3 is open, so 3 will be shown by empty circle, 5 shown by dark circle, and then region between them will be shaded like this. Similarly you can show the right open, left close also. तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल को दिखा सकते हैं. 3 to 5 है ओपन इंटरवल है, तो 3 भी नहीं है इसमें पार्ट में, 5 भी नहीं है, तो 3 और 5 को आप इक्वल नहीं लगाएंगे और 3 और 5 के साथ एम्प्टी सर्कल यूज करेंगे, बीच का सारा पोर्शन शेड होगा. 3 5 ये क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे 3 भी इंटरवल में आएगा, 5 भी इंटरवल में आएगा, तो 3 और 5 दोनों को डार्क सर्कल से शो करेंगे और इस तरह से आपका ये आपका बीच का शेड हो जाएगा. और ये आपका सेमी ओपन सेमी क्लोज वाला इंटरवल है, लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज है, 3 इंटरवल का पार्ट नहीं है, तो 3 को डार्क सर्कल से नहीं शो करेंगे आप, एम्प्टी सर्कल से शो करेंगे, 5 को डार्क सर्कल से और बीच का पोर्शन शेड कर देंगे. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग. So next topic is power set. So we have studied about subsets of a set and their properties also. So you know that every set is subset of itself and empty set is subset of itself. Empty set is subset of every set. Using that, if you have a set, power set, it is a set having elements also as sets. So here power set is defined as it is subset of, so it is subset of sets. It is defined as set of all subsets of a given set. So it is defined as set of all subsets of a given set. For example, if you have a set A given as 1, 2, then you can write subsets of A. First write subsets of A. Subsets of A are, first is the empty set, then write subsets having one element like element containing 1 only, element containing 2 only, set containing 1, set containing 2, and then set containing both elements. And now when you have to write the power set of A, power set of A is denoted by PA, and for this you have to write a set where all these 4 sets will become part of this set. So 5, comma, set containing 1, comma, set containing 2, comma, set containing 1, 2. This is called the power set of A. So this you have to clearly understand. What is the power set? It is defined as the set of all subsets of a given set. For example, you have taken a set containing 2 elements. First write the subsets of this set. Smallest subset is 5, empty set, and largest will be given set, and in between write sets containing 1 element, sets containing 2 elements like this. And then to write the power set, you have to write all the subsets in a given set again. So enclose all these sets again in a curly bracket. So consider one more example like this. Second example you can take is, say set A is given 1, 2, 3. So here first write the subsets of A. Subsets of A are, first is 5, then set containing 1 element, you will get 3 such sets, 1 containing 2,
containing only 3. Then write sets containing 2 elements, containing 1 and 2, containing 2 and 3, containing 1, 2 and 3, 1 and 3, at last containing all the 3 elements 1, 2, 3. And to write the power set here, you have to write that all the sets, all the subsets to be written again in the curly bracket. So start with this 5, 1, 2, 3, next 1, 2, then 2, 3, then 1, 3, and at last 1, 2, 3, and then close the curly bracket. So in this way you can write the power set of a given set. So that's all in this video.